हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून। तो कल के हमारे सेशन में पार्टनरशिप में हमने गुडविल वैल्यूएशन कैसे करना है ये समझ लिया। 3 मेथड्स, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, wherein we had 2 methods, that is simple average and weighted average. Second, we talked about the super profit method, जिसमें normal profit, average profit minus normal profit is what we do to arrive at the super profit, and super profit multiplied by number of years purchase gives us the value of goodwill. और तीसरी मेथड हमने डिस्कस की, दैट वाज कैपिटलाइजेशन मेथड, व्हिच वाज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड, जहां गुडविल का वैल्यूएशन विल बी द सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, और पहले आप कैपिटलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर लो, वन एंड द सेम थिंग। राइट, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं गुडविल अकाउंटिंग से रिलेटेड। ना, जब हम लोग गुडविल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली आपने ध्यान देनी है। वो ये कि क्या गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी गई है, और अगर हां तो इन दैट केस यू फर्स्ट नीड टू राइट ऑफ दैट गुडविल, ये पहली बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, या फिर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल शुड नॉट बी डन थ्रू द गुडविल अकाउंट। अगर ये स्पेसिफिकली आपसे बताया गया है दैट द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज नॉट टू बी डन थ्रू द गुडविल अकाउंट, इसका सिंपल मतलब है दैट द गुडविल हैज टू बी एडजस्टेड इन द पार्टनर्स अकाउंट इन द गेन सैक्रिफाइस रेशियो एंड नॉट थ्रू द गुडविल अकाउंट। सो इफ देयर इज अ, वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, if goodwill given in बैलेंस शीट, इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको कर देना चाहिए राइट ऑफ। दैट गुडविल शुड बी क्लोज टू जीरो, उसका बैलेंस जीरो कर देना चाहिए। व्हाट विल बी द एंट्री? राइट ऑफ इन अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सो व्हाट विल बी द एंट्री? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्हीं को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं। ओल्ड पार्टनर्स इन देयर एग्जिस्टिंग पीएसआर, दैट इज ओल्ड पीएसआर, अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। मान लो ए और बी पार्टनर है और गुडविल 50,000 रुपए दी गई है, उनका एग्जिस्टिंग रेशियो है 3:2। What we will do? A's account debit 30,000, B's account debit 20,000, to goodwill account 50,000। इससे क्या होगा? गुडविल का जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा, मतलब गुडविल विल नॉट बी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स नाउ। अब जो आपका नया गुडविल है, दैट गुडविल नीड टू बी अकाउंटेड एंड एडजस्टेड। हाउ विल वी डू दैट? गुडविल, दैट इज न्यू गुडविल, गुडविल नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें दो तरीके बनते हैं, दो चीजें बनती हैं। एक, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर है, जो आने वाला पार्टनर है, जो इनकमिंग पार्टनर है, उसने अपने गुडविल का हिस्सा लाया है। Whereas the second case can be what? New partner does not bring goodwill share separately.
मतलब उसने कंबाइंड कैपिटल लेके आ गया है और गुडविल का पैसा अलग से नहीं लाया है, गुडविल के लिए उसने अलग से कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, राइट। अब यहां पे अगर वो गुडविल का पैसा अलग से लाया है तो यहां आपके पास बनते हैं दो ऑप्शन। व्हाट आर द टू ऑप्शंस? नंबर वन, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल थ्रू गुडविल प्रीमियम। और अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि गुडविल प्रीमियम भी बुक्स में नहीं लाना है, देयर इज द अकाउंटिंग हैज टू बी डन थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन इन दैट केस इट विल बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स अकाउंट, थ्रू पार्टनर्स अकाउंट। तो पहले केस में जो उसने गुडविल लाई, गुडविल ब्रॉट इन की एंट्री हम लोग क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। टू whom? To what? गुडविल प्रीमियम अकाउंट। वेयर एज अगर उसने गुडविल की कैश लाई है बट यू वांट टू डू इट थ्रू पार्टनर्स अकाउंट फॉर द गुडविल शेयर ब्रॉट इन, you'll pass the entry for this as cash account debit to new partners capital, to new partners capital. You'll credit it to his capital account instead of bringing the goodwill account into the books. तो मान लो उसने 5 लाख रुपए कैश लाई है कैपिटल के अगेंस्ट और 50,000 रुपए लाए गुडविल के। सो इन सच केस you'll pass the entry as what? अगर फर्स्ट केस होगा तो योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 लाख टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट 50,000। वेयर एज अगर आपको गुडविल प्रीमियम अकाउंट बुक्स में नहीं लाना है, यू हैव टू एडजस्ट एवरीथिंग थ्रू द पार्टनर्स अकाउंट, यू विल सिंपली पास द एंट्री फॉर दैट इज व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,50,000। यू विल नॉट ब्रिंग द गुडविल अकाउंट इनटू द बुक्स। इज द पॉइंट राइट? क्लियर सबके लिए? नाउ for transfer of goodwill, for transfer of goodwill premium, गुडविल किसने कंट्रीब्यूट की? पैसा लाया नए पार्टनर ने, पर किसके वजह से लाया? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो फर्म के आने वाले प्रॉफिट्स में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए वो गुडविल लेके आ रहे हैं नहीं। सो दैट मीन्स दे बिकम द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देयरफॉर व्हाटएवर इज द गुडविल प्रीमियम दैट विल गेट ट्रांसफर टू whom? To the existing partners, or I would say sacrificing partners in their sacrifice ratio. So for that we'll pass the entry is what? Goodwill premium account debit to sacrificing partner. To whom? Sacrificing partner. In which ratio? In sacrifice ratio. आपके 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में नॉर्मली क्या होता था? तो जो नया पार्टनर होता था वो गेन करता था और एग्जिस्टिंग पार्टनर उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में सैक्रिफाइस करते थे, और इसलिए वहां पे आप लोग सिंपल एंट्री लिख दिया करते थे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, क्योंकि उनका सैक्रिफाइस रेशियो यूज्ड टू रिमेन सेम, इसलिए, राइट। वेयर एज यहां अगर हमको एंट्री करनी है, इफ वी वांट टू पास द एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ गुडविल फॉर एडजस्टमेंट of goodwill, will pass the entry is what? Gaining partner debit, gaining partner debit to sacrificing partner, to sacrificing partners. Which ratio? Gain or sacrifice ratio. Do you get this? पॉइंट समझ में आया? अब अगर मान लो उसने नए पार्टनर ने गुडविल का पैसा अलग से नहीं लाया है, इन दिस केस यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स अकाउंट
adjustment of goodwill through partners account or adjustment of goodwill through goodwill account. क्या ऑप्शन है हमारे पास? Either you adjust the goodwill through partners account or you adjust the goodwill through the goodwill account. अब if you are adjusting it through partners account, the entry will remain same. What will that be? Gaining partner account debit to sacrificing partner. इस केस में इनकमिंग पार्टनर का, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल बी लेस देन द अमाउंट दैट ही हैज ब्रॉट इन. मान लो उसने 5 लाख रुपए लाया और उसके शेयर में 50,000 रुपए की गुडविल पड़ रही है, तो उसका कैपिटल बैलेंस रहेगा 4,50,000 रुपए. क्यों? 50,000 आपने गुडविल को उसको डेबिट कर दिया है नहीं, राइट? बट इफ यू वांट टू एडजस्ट इट थ्रू द गुडविल अकाउंट, if you want to adjust it through the goodwill account, in this case there will be two entries, that is raise the goodwill, raise goodwill of firm. यहां पे पार्टनर की गुडविल नहीं कंसिडर होगी, यहां पे फर्म की गुडविल कंसिडर होगी. What is the entry that you will pass for that to raise the goodwill? Goodwill account debit to what? Old partners in old PSR. एग्जिस्टिंग पार्टनर ने वो गुडविल बनाई थी, इसलिए क्रेडिट भी उन्हीं को जाएगा. इज इट राइट? वेयर एज यू कैन नॉट शो द सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन द बैलेंस शीट, और क्योंकि ये गुडविल हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? गुडविल राइट ऑफ करना पड़ेगा. राइट ऑफ of goodwill of firm. What is the entry that will pass for this? All partners including new partner. In which ratio? New PSR debit to what? Goodwill account. दोस्तों इन चारों में से आप कोई सी भी मेथड फॉलो कर लें, इफेक्टिवली तो तीन ही, इसमें से कोई भी मेथड फॉलो कर लें, अल्टीमेटली अकाउंटिंग इफेक्ट ऑन द पार्टनर्स अकाउंट्स इज गोइंग टू रिमेन सेम. सब केस में पार्टनर्स के अकाउंट पे इफेक्ट सेम रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज. कैसे वो बताता हूं. वैसे आर डन? Shall I? Now suppose I've been given the information something like this. A and B are partners sharing profits in the ratio of 4:3. In the ratio of 4:3. Admit new partner C who gets 1/4 share from A and 1/3 share from B. 1/4 share from A and 1/3 share from B. का मतलब क्या हुआ? A का जो शेयर है उसका 1/4 ये C को जा रहा है. B का जो शेयर है उसका 1/3 ये भी C को जा रहा है. Are you able to get it? 1/4 of 4/7 नहीं, sorry, 1/4 of
7 नहीं, 1/4 of what? 1/4 of 4/7, 1/3 of 3/7. Did you understand it? Now, he brings rupees 10 lakh towards capital and required share of goodwill firm's goodwill is valued at rupees 5,25,000. Firm's goodwill is valued at 5,25,000. Now, let's first try to derive कि आखिर C का शेयर क्या बनेगा. A's new share या A's sacrifice will be what? 4/7 into 1/4, that is 1/7. ये A का sacrifice है. B's sacrifice is what? 3/7 into 1/3, that is 1/7. है ना? So C's gain is equal to what? 1/7 plus 1/7, that is 2/7. है ना? Now, if I want to calculate the new PSR and old PSR, A, B and C, their old profit sharing ratio was given as 4/7, 3/7 and dash. है ना? The ratio was 4:3, so 4/7, 3/7 and dash. Whereas sacrifice or gain, we have already calculated it. A's sacrifice 1/7, B's sacrifice 1/7, C's gain 2/7. So what will be the new PSR? New PSR will be 3/7, 2/7 and 2/7 respectively. So the new PSR becomes 3:2:2. Is this point right up till now? Right? Now, C's share in goodwill is how much? 5,25,000 into 2/7. Am I going good? So that comes to 1,50,000. बराबर है नहीं? ये 1,50,000 किसने किसने कंट्रीब्यूट किया? ए और बी ने. सी लेके आया, पर उसको ये हिस्सा मिला कहां से? ए और बी से. किस रेशियो में? 1:1. You can either simply do 1,50,000 into 1/2 into 1/2, or you can do 5,25,000 into 1/7 into 1/7. A's sacrifice is equal to 5,25,000 into 1/7, that is 1,50,000. Sorry, 75,000. बराबर है क्या? और 1,50,000. 1,50,000 क्या है? सी का गेन. उसमें से आधा ए का और आधा बी का सैक्रिफाइस है या नहीं? सो देयरफॉर इनटू 1/2, दैट आल्सो कम्स टू 75,000.
है ना. इनफैक्ट दिस इज ए एंड बी सैक्रिफाइस. A and B's sacrifice is 75,000 each, क्योंकि दोनों सेम सैक्रिफाइस कर रहे हैं. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है या नहीं? नाउ लेट्स कम टू द अकाउंटिंग एंट्रीज. सबसे पहले ऑप्शन 1. व्हाट इज ऑप्शन 1? थ्रू गुडविल प्रीमियम. गुडविल अकाउंटिंग, गुडविल प्रीमियम. बराबर. पहला पैसा लाया, क्या एंट्री पास करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट 11,50,000. कहां से कैलकुलेट किया मैंने 11,50,000? 10 lakh rupees he brought in the form of capital and 1,50,000 he brought in the form of goodwill. To seize capital rupees 10 lakh and to goodwill premium 1,50,000. Is it right? Being the funds brought by C, राइट है. अब क्या हुआ? अब गुडविल प्रीमियम बिलोंग टू हुम? ए एंड बी. किस रेशियो में? 1:1, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. सो व्हाट इज द एंट्री दैट विल पास फॉर दैट? गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट rupees 1,50,000 to A's capital 75,000 to B's capital 75,000. Being the goodwill transferred in sacrifice ratio. समझ में आया ऑप्शन 1? नो फर्दर इफेक्ट्स, दिस मच इज इनफ. कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है that the partners withdrew the goodwill to the extent of 50%. 50% of total goodwill नहीं, 50% of the amount credited to them, मतलब 37,500 each. In that case, for that you will be passing the entry as A's capital debit 37,500, B's capital debit 37,500 to bank account 75,000. Is it right? है ना? So whenever you are passing the entries related to goodwill, you have to take care of only the lines which are given to us, nothing to be thought beyond that. Is right? क्योंकि बच्चे अगर मैक्सिमम मिस्टेक कर रहे हैं फाउंडेशन में, स्पेशली फॉर द पार्टनरशिप क्वेश्चन, सो दे आर डूइंग द कैलकुलेशन मिस्टेक ऑन द पीएसआर, दे आर डूइंग द कैलकुलेशन मिस्टेक्स ऑन द गुडविल गेन सैक्रिफाइस, एंड दैट्स वेयर देयर होल आंसर इज गोइंग रॉन्ग. आपका गुडविल अकाउंट का गलती हुआ, उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस गलत हो जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस गलत होगा तो आपका बैलेंस शीट अपने आप गलत हो जाएगा. कैश बैंक का भी जो सेटलमेंट है वो भी गलत हो सकता है. So multiple effects of one single adjustment is there. That's why you have to give importance to the PSR calculation as well as the goodwill calculation. Is it right? Now, what is the option 2 with us? We don't want to open a separate goodwill premium account, but we want to adjust everything through partners capital. Partners capital. Right? You'll simply pass the entry as what? Bank account debit 11,50,000 to C's capital 11,50,000. That's the first part of it. Being the funds brought in by the new partner, right? पर इसमें से 1,50,000 किसको बिलोंग करते हैं? 1,50,000 किसके हैं? टू द ओल्ड पार्टनर्स, नहीं,
to the sacrificing partners in sacrifice ratio. So second entry will be what? C's capital debit, because he is the gaining partner. Gaining partner debit by how much? Gain amount, that is 1,50,000. To A's capital with the sacrifice value, rupees 75,000. To B's capital, rupees 75,000. To B's capital, rupees 75,000. Being the goodwill adjusted amongst the partners. Being the goodwill adjusted amongst the partners. ऑप्शन 3 ये हो गया आपका ऑप्शन 2 जिसमें गेन सैक्रिफाइस में एडजस्ट किया आपने. ऑप्शन 3 यू वांट टू डू इट थ्रू द गुडविल अकाउंट. ऑप्शन 3 थ्रू goodwill account. Right. What will you do in this case? In this case, you will first be passing the entry for the cash brought in. You will simply pass the entry as bank account debit to C's capital account. पैसा आ गया, being the cash brought in. Now, you cannot pass the entry for goodwill directly. You will first be required to raise the goodwill. But when I am raising the goodwill, I am going to raise the goodwill of the firm, not of the individual partner. So what is the entry that I am going to pass for that? Goodwill account debit. Rupees 5,25,000. Are you able to understand this? 2, क्योंकि फर्म का गुडविल 5,25 है या नहीं. 2 A's कैपिटल. A का ओल्ड रेशियो कितना था? 4/7. A का ओल्ड रेशियो कितना था? 4/7. That comes to 3 lakh. 2 B's capital, 2,25,000. 2 B's capital, 2,25,000. Are you able to get this? है ना? Being the goodwill of the firm raised. Being the goodwill of the firm raised. आपने goodwill raise कर ली. Now, can you show the raised goodwill into the balance sheet? This is a self-generated asset. Accounting standard 26 के हिसाब से ये दिखाई नहीं जा सकती. So what will you do for this? You will immediately be required to write off. Writing off means what? Closing the account. तो अब write off करना है. मतलब किसके account में write off करोगे? All partners. All partners includes C as well or not. So we'll pass the entry for that as A's capital debit. Rupees 2,25,000. B's capital debit. Rupees 1,50,000. C's capital debit. Rupees 1,50,000 to goodwill account. To goodwill account 5,25,000. Being the goodwill of the firm written off. Being the goodwill of the firm written off. दोस्तों, चाहे आप मेथड ऑप्शन 1 की बात करें, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 3 की बात करें, इन ऑल द केसेस पार्टनर्स के अकाउंट में इफेक्ट उतने ही आए हैं. कैसे? ऑब्जर्व इट. इन द फर्स्ट ऑप्शन 3 की बात करते हैं पहले. गुडविल डेबिटेड बाय 5,25,000. गुडविल क्रेडिटेड बाय 5,25,000. गुडविल अकाउंट ऑटोमेटिकली गॉट क्लोज्ड विद दैट. A was credited with 3 lakh, but he got debited with 2,25,000. मतलब A को नेट 75,000 रुपए क्रेडिट हुए या नहीं? उतना ही उसका सैक्रिफाइस था ना. हाँ ना. B was credited with 2,25,000 but debited with 1,50,000. मतलब नेट क्रेडिट ऑफ 75,000. B का भी सैक्रिफाइस उतना ही था.
and C was only debited with 1,50,000, whereas here it was credited with 11,50,000 जो पैसा लाया था, मतलब इफेक्टिवली उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए बचे रहे या नहीं? Did you understand this? The first aspect clear for everyone. यही अगर ऑप्शन 1 की बात करें, सॉरी ऑप्शन 2 की बात करें, C was first credited with 11,50,000, then he was debited with 1,50,000. That means net credit of 10 lakh. A and B got credited with 75,000 each. यही तो हम चाहते थे ना, sacrifice of them. यहां पर C was only credited with 10 lakh क्योंकि उसका कैपिटल 10 लाख ही था, but A and B got credited with 75,000 each or not? That was their sacrifice. Whereas goodwill premium account, here it was debited and here it was credited. So goodwill premium account automatically got closed or not? So ultimately A के कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 10 लाख रुपए बैलेंस होना चाहिए था, है तीनों मेथड में, तीनों ऑप्शंस में. हमारे A और B के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था नेट 75,000, तीनों ऑप्शन में वही हुआ. So whichever option you are following in the examination, unless otherwise provided, that all will be giving you the same answer. But most satisfying is gain sacrificing. New partner bringing in cash, bank account debit to partner's capital account, then goodwill to be adjusted in gain sacrifice ratio. Got it right? Clear सबके लिए? लिखा आप लोगों ने सब? Shall I come ahead? The next part that we need to talk about, online. Are we good? जी जहां तक बात है नोट्स के, नोट्स आपको दोपहर शाम तक के मिल जाएंगे इन द पीडीएफ फॉर्म. और क्योंकि आपके अकाउंट्स के नोट्स प्रिंटिंग में गए हुए हैं, तो अकाउंट्स के नोट्स आपको सोमवार को मिलेंगे, आज नहीं. राइट जी. स्टार्ट्स प्लीज कलेक्ट योर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स नोट्स फ्रॉम डिस्पैच रूम. आज ही आप मैथ्स के सेशन के पहले आपके मैथ्स और इकोनॉमिक्स के नोट्स डिस्पैच रूम बाजू में जो है वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा. और आई एम गोइंग टू शेयर द नोट्स पीडीएफ ऑन द ग्रुप डायरेक्टली. राइट, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बनाया हुआ है वहीं पे रहेंगे नोट्स. तो जो लोग भी अब तक के उस ग्रुप में नहीं है, दे शुड बी गेटिंग इनटू दैट ग्रुप एज अर्ली एज पॉसिबल. ऑलराइट, ओके. I'll come to the next aspect, next concept. अब दो ही concept बच गई हैं on the first part, that is admission, retirement, death वाला part. One is revaluation का concept and second is the concept related to reserves and surplus. इसके अलावा इस पूरे part में admission, retirement, death वाला जो part है, इस पूरे part में concept wise बचता है सिर्फ capital adjustment, JLP, SLP and section 37. section 37 तो सिर्फ reference है. JLP, SLP का अकाउंटिंग और द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. जहां तक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात है, ये जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे उस समय पे विल बी डीलिंग विद दैट कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चंस. ऑलराइट, ओके. सो लेट मी टॉक अबाउट द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ assets and liabilities. दोस्तों हमारे पार्टनर्स जो हैं उन्होंने आज तक बिजनेस कैरी किया था. अब अगर फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर फर्म में कोई बदलाव आते हैं, इन दैट केस जिन पार्टनर्स ने आज तक कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने आज तक की वैल्यू के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया था. पर जो नया पार्टनर आ रहा है उसको अगर उसने अलग से फर्म स्टार्ट की होती तो उसने आज की वैल्यू के हिसाब से सारे इन्वेस्टमेंट्स किए होते या नहीं. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड टू डू द चेंज और एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. सो वी नीड टू डू द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. नाउ व्हेन वी आर डूइंग द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, माइंड वेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन दैट केस we are trying to change the value of assets and liabilities, and that change will result into the profit or loss for the business. Such profit
or loss on revaluation belongs to the partners who were carrying out the business till now, that is the old partners. But in which ratio? In their existing ratio, that is the old PSR. So what do? We prepare an account called as revaluation account or P&L adjustment account. This revaluation account or P&L adjustment account will primarily be a nominal account. Why? Because it has been prepared to understand the profit or loss on the revaluation of assets and liabilities. Now, if you are doing the upward revaluation of assets and liabilities, if you are doing upward revaluation मतलब क्या? जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दी गई है उससे आप ज्यादा वैल्यू डिक्लेयर करना चाहते हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपवर्ड रिवैल्यूएशन. सो व्हेनेवर यू वांट टू डू द अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ योर असेट्स को अगर अपवर्ड लोगे तो इसका मतलब गेन होगा या नहीं. फॉर दैट यू विल पास द एंट्री एज रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो एनी एंड एवरी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स will come on to the credit side of revaluation account, whereas अगर asset को आपने downward revalue किया मतलब उसमें loss हुआ, for that will pass the entry as revaluation account debit to respective asset account. Downward revaluations onto the debit and upward revaluations will come on to the credit, जबकि हम लोग asset की बात कर रहे हैं. पर if you are talking about the लाइबिलिटी में अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है. अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमारे बिजनेस का नुकसान बढ़ रहा है या नहीं. दैट्स व्हाई अपवर्ड रिवैल्यूएशन इन लाइबिलिटीज विल कम ऑन टू द डेबिट साइड. यू विल पास द एंट्रीज व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट. वेयर एज इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ राइट ऑफ और राइट बैक ऑफ द लाइबिलिटी, दैट इज द डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, इन दैट केस इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ गेन फॉर अस और नॉट. मान लो कोई पुराना क्रेडिटर था, अब वो चल बसा, अब उसके पैसे नहीं देने. इन दैट केस यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्रेडिट द रिवैल्यूएशन अकाउंट. यू विल पास द एंट्री एज रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. एम आई गोइंग गुड? नाउ देयर कैन बी अ सिचुएशन व्हेन देयर आर सर्टेन accrued incomes or accrued expenses which are not yet recorded. So if you want to record the unrecorded liabilities, it is a loss. But if you want to record the unrecorded assets, it is a gain. So all the accrued expenses or unrecorded liabilities will come on to the debit side, whereas all the accrued incomes or the unrecorded assets will come on to the credit side. Are you able to understand this? Now, if the revaluation account, credit में क्या था? Profit, incomes, gains. Debit में क्या है? Losses, expenses or not? So what we will do? If in the revaluation account credit is greater than debit, this indicates profit on revaluation. And this profit on revaluation belong to whom? Partners. कौन से वाले? Old partners. So for that purpose we'll pass the entry as revaluation account debit to old partners. In which ratio? Old ratio. Is it right? But if debit is greater than credit, that means there is a loss on revaluation. Are you able to get this? And if there is a loss on revaluation, this belongs to whom? Partners. किस ratio में? So we'll pass the entries what? Old partners. In which ratio?
old PSR debit to what? Revaluation account. मतलब loss on revaluation will get debited to the partner's capital account and profit on revaluation will get credited to the partner's capital or current account. Is this point right? समझा आपको? छापो फटाफट. Once I come back, we'll be completing with the questions of partnership and immediately we'll move on to the next one, that is NPO, single entry and final account. We'll discuss about the concepts of all those at a go, and then we'll continuously be only solving the questions related to NPO, single entry and final account. Okay. Now let's talk about the next concept in this, and that concept is what? Memorandum revaluation. What is memorandum revaluation? जब पार्टनर्स ने ये तय किया है कि हमको रिवैल्यूएशन का जो भी इफेक्ट है ये असेट्स और लायबिलिटीज पे नहीं देना है, even if there is a change in the value of assets and liabilities, we do not want to give the effect of that on to the assets and liabilities. मतलब ये कि वो चाहते हैं कि आप पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन करिए, उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करिए और उसके बाद आप रिवैल्यूएशन को रिवर्स कर दीजिए. एंड व्हेन यू विल बी रिवर्सिंग द रिवैल्यूएशन, जिस असेट की वैल्यू बढ़ाई थी वो असेट की वैल्यू घट जाएगी, जिस एसेट की वैल्यू घटाई थी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. मतलब यू विल बी गिविंग एग्जैक्ट ऑपोजिट इफेक्ट्स और नॉट. एंड व्हाट एवर इज द प्रॉफिट और लॉस नाउ, अगर फर्स्ट पार्ट में आपको प्रॉफिट मिला तो सेकंड पार्ट में हमेशा लॉस आएगा. कैसे? जस्ट ऑब्जर्व दिस. इफ दिस इज माय मेमो रिवैल्यूएशन अकाउंट, just for the sake of understanding I am drawing, we are not supposed to draw in the examination. If this is my memorandum revaluation account, what am I going to do in this case? Increase in asset and decrease in asset. This is how I am going to present it, right? Suppose there is no other change and there is a profit. My increase in assets is, let's say, 10,000 and my decrease in assets is only 2,000. So there is a profit of 8,000 or not, right? Now they say that you need not show the increase or decrease in the value of assets into the balance sheet. मतलब मुझे assets और liabilities को जो value पे थे उसी value पे pre-exist करना पड़ेगा या नहीं. So any and every decrease in the value of asset, now I'll be crediting, and any and every increase in the value of assets I'll be required to debit it or not. जो मैंने asset की value बढ़ाई थी वो अब मैंने कम करनी है और जो asset की value घटाई थी उसको बढ़ा देना है. So that's why I'll pass the reverse entries or not. पहले entry क्या पास की थी मैंने? Asset account debit to revaluation account 10,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 2000. अब मुझे उन्हीं एंट्रीज को रिवर्स पास करना पड़ेगा या नहीं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 8000 नाउ. Every time it is going to happen in the same way when you are doing memorandum revaluation. If the first part of revaluation account is going to give you the profit, the second part of the memorandum revaluation will always give you the loss. If the first part has given you the loss, second part will always give you the profit. Did you understand this logic? ये क्यों होता है ये समझ में आया आपको? क्योंकि आपने सारे के सारे इफेक्ट रिवर्स करने हैं. अब इतना डिटेल में कहां अकाउंटिंग करने बैठेंगे हम लोग एग्जाम में. इन द एग्जामिनेशन व्हाट यू आर सपोज टू डू, you prepare a statement of revaluation profit or revaluation loss. If there is a profit,
that profit belong to whom? कौन से partners? Old partners. So there are two scenarios that can come. Case of memo profit, memorandum profit. You'll pass the entry for that as what? Memorandum revaluation account debit to old partners, in which ratio? Old PSR. Are you able to understand this? But ये profit अब reverse करना पड़ेगा या नहीं? Reverse will be done in all partners account. In which ratio? New ratio. So what is the entry that will pass for that? All partners. Which ratio? New ratio. Debit to memorandum revaluation, being the profit on revaluation reversed. Did you understand this? इसका हम लोग कंबाइन इफेक्ट दे सकते हैं. कैसे? गुडविल की एंट्रीज है ना ये. गुडविल में क्या किया था आपने? रेज ऑफ गुडविल. क्या एंट्री पास करते हो आप? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर. राइट ऑफ गुडविल क्या एंट्री पास करते हो? ऑल पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. बराबर. एग्जैक्टली वही किया ना हमने. So here also we can pass a combined entry. What will that combined entry be? Gaining partner account debit to sacrificing partner. In which ratio? Gain sacrifice ratio. Or combined entry that is gaining partner account debit. Gaining partner account debit to what? Sacrificing partner. To sacrificing partner. Did you understand this? है ना? Now, अगर मेमोरेंडम लॉस हुआ, केस ऑफ मेमोरेंडम लॉस, मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको लॉस होगा तो सेकंड पार्ट में हमेशा प्रॉफिट ही होगा या नहीं? If the first part of revaluation gives you the loss, the reversal in the memorandum will give you the profit. Loss किसको जाएगा? Old partners. और profit किसको जाएगा? All partners in new PSR. So in this case, if I want to pass the separate entries, what will that be? Old partners in which ratio? Old PSR debit to memorandum revaluation account. But again, will be required to reverse the loss also or not? So what will be the entry for reversal of loss? Memorandum revaluation account debit to all partners. Exact reverse. In which ratio? New PSR. Did you get this? Are you able to understand? Whereas alternatively, what we can do? We can pass a combined entry or not? What will that combined entry be? पहले क्या किया था हमने combined entry? Gaining partner account debit to sacrificing partner. अब उसकी reverse हो जाएगी combined entry. What will that be? Sacrificing partner account debit. क्योंकि वो तुम्हारे लॉस में भागीदार बन रहा है या नहीं, इसलिए गेनिंग पार्टनर को तुमको क्रेडिट करना पड़ेगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको डेबिट करना पड़ेगा. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर. इन विच रेशो? इन गेन सैक्रिफाइस रेशो. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के कंसेप्ट. किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरी? कंप्लीटेड.
Hello. Done? The last concept in this is that of the reserves. The reserves and surplus. Now what I'll do is, before reserves and surplus will directly be transferred to whom? Old partners in their old PSR. Any kind of reserves or accumulated losses, just write the line for reserves and accumulated losses. All the reserves and accumulated losses Hello. क्या लिखा? All the reserves and surplus and accumulated losses. All the reserves and surplus and accumulated losses belong to the existing partners in their existing ratio. In their existing ratio. Under that, accounting entries. Reserves and surplus account debit to old partners in old PSR. Reserves and surplus account debit to old partners in old PSR. Next one. Old partners in old PSR account debit old partners in old PSR account debit to accumulated losses. Right? Okay. So let me come to the questions directly now. I'll just put the book in front of you. I've shared the book on the group. Right?
Just 1 minute. बस इसीलिए एप्पल पसंद नहीं है, कंपेटेबिलिटी नहीं है, फटाफट हो जाना चाहिए था काम अब तक के। इधर ओपन हो गया, सब कुछ हो गया। Yep. Hmm. Just 1 minute. छोटी सी फाइल है, 3 MB की, कुछ 22 MB की, उसमें भी इतना समय लगा रहा है। I think you all have downloaded it already. हम ही स्लो पड़ गए अब। अगली जनरेशन तो कहाँ से कहाँ भाग रही है। मैं हर बैच में कहता हूँ, मैं फाउंडेशन में रह गया, तुम आगे निकल गए। वेल, नॉट अ प्रॉब्लम। NPO, incomplete records, partnership. Now we have already talked about all the concepts: capital account, current account, distinction, uh, journal entries for appropriation of profits. We have talked about the profit and loss appropriation. अब मैं आ रहा हूं directly on to the questions. First part, question number 1. ज़्यादा questions नहीं डाले मैंने. If you'd be observing, the total questions must be around 20, nothing more than that. So we'll be able to sort. 20 भी नहीं है. Dissolution से LLP onwards it is dissolution. Right? तो चलिए एक एक करके बात करना चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की. X, Y and Z who are presently sharing the profits and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share the future profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st of April 2020. An extract of their balance sheet as on 31st March 2020 is as follows. Sundry creditors, outstanding rent, land and building, plant and machinery, stock, debtors less provision. It is decided that land and building be revalued to 2,90,000, plant and machinery be depreciated by 15%. Stock is found overvalued to the extent of 38,000.
Provision for doubtful debts is to be made at 5% of the debtors. An item of 30,000 included in creditors is not likely to be claimed. Rent of rupees 4,000 still outstanding. Amount of out of the amount of insurance which was debited entirely to the P&L account, rupees 5,000 to be carried forward as an unexpired insurance. Out of the total commission received, 3,000 is to be treated as advance commission. This amount was earlier credited to the profit and loss account. Pass the necessary journal entries and prepare the revaluation account. So we have to pass the entries as well as prepare the revaluation account. चलिए बनाइए journal and then around 1.5 page का journal, and then you have to prepare the revaluation account for approximately half of the page. जर्नल एंट्री एक पेज में भी हो ही जाएगी, ठीक है. लेट्स हैव द एक्स्ट्रा स्पेस. Shall I? Shall I start? First one, land and building is to be valued at 2,90,000. Plant and machinery depreciated by 15% and stock is found overvalued. तीनों के तीनों लॉस वाले आइटम है, यानी इवन डेटर्स चारों के चारों लॉस वाले आइटम है. So these all have to be credited and revaluation account will be debited or not. So write down the journal entry. Revaluation account debit. Revaluation account debit. उसके अमाउंट क्या है वो बाद में कैलकुलेट करते हैं. टू लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, क्योंकि दी गई थी 3 लाख पर आपकी रिवैल्यूड अमाउंट है 2,90,000, मतलब 10,000 से कम हुआ. सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ओ आई एम सॉरी, वेट, इसमें प्रॉफिट है, माय बैड. टू प्लांट एंड मशीनरी, नॉट लैंड एंड बिल्डिंग, आई एम सॉरी, मैं क्रेडिटर के साथ कंपेयर कर गया उसको. टू प्लांट एंड मशीनरी 15,000. टू स्टॉक 38,000. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000. वाई 5,000? 3 लाख रुपए के डेटर्स दिए हुए, उसका 5% मतलब 15,000 रुपए की प्रोविजन चाहिए आपको. 15,000 में से 10,000 की प्रोविजन तो ऑलरेडी है ना हमारे पास. सो वी वांट टू इंक्रीज द प्रोविजन ओनली बाय रुपीज 5,000. देयरफॉर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000. टू सॉरी इन तीनों का टोटल विल गो टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. कितना है? 58,000. 58,000. Is it right? And if you observe the presentation in the revaluation account, how will it look like? If this is
माई रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है फॉर्मेट, हाउ विल इट बी प्रेजेंटेड? We are talking about question number 1 of part A, set A. Here it will come on to the debit side. What? To plant and machinery, rupees 15,000. To stock, 38,000. And to provision for doubtful debts, rupees 5,000. Did you understand the calculations everywhere? Yes or no? Now, लैंड एंड बिल्डिंग दी गई है 2,90,000, सॉरी 2,50,000 पर, हमको ले जाना है 2,90,000 पे, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है नहीं। अच्छा, इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग द असेट्स रीवैल्यूड, बीइंग द असेट्स रीवैल्यूड। नेक्स्ट एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज 40,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 40,000। बेटा 1.5 पन्ना बोला था मैंने जर्नल एंट्रीज के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, being the land and building appreciated. So this will come on to the credit side of your revaluation account or not? So revaluation account, credit side, by land and building, rupees 40,000. Are you able to understand the presentation? Next, an item of 30,000 included in the sundry creditors is not likely to be claimed. Rent of 4,000 is still outstanding. Rent थी कितनी? Outstanding 10,000, पर अब आउटस्टैंडिंग कितनी है? 4,000, मतलब 6,000 से आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो रही है नहीं। सो व्हाट इज द एंट्री दैट विल पास? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आई एम सॉरी, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 6,000, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 6,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 30,000, sundry creditors account debit 30,000, to revaluation account, to revaluation account 36,000, being the liabilities written back, being the liabilities written back, इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां आएगा? बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड में रुपीज 30,000, एंड बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज 6,000. Am I going good? Now द कमीशन एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अक्रूड एक्सपेंसेस और इनकम्स है। इंश्योरेंस प्रीपेड है जो P&L अकाउंट को डेबिट हो चुका है, अब वो घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं? यस और नो? एंड एट द सेम टाइम कमीशन भी प्री रिसीव्ड है, वो घटाओगे तो इनकम घटेगी। अकॉर्डिंगली राइट डाउन प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000, prepaid insurance account debit 5,000, to pre-received commission 3,000, to pre-received commission 3,000, to revaluation account 2,000, to revaluation account 2,000. Is it right?
Accordingly, the effects of that will come in the revaluation account. Buy prepaid insurance. How much? 5,000. And 2, pre-received commission rupees 3,000. अच्छा, जर्नल एंट्री का नरेशन क्या आएगा? Being the accrued expenses and incomes accounted. Being the accrued expenses and incomes accounted. Is it right? अब आपका जो बचा हुआ अमाउंट है यानी कि प्रॉफिट और लॉस, दैट नीड टू गेट क्रेडिटेड टू हुम? पार्टनर्स. विच रेशो? ओल्ड रेशो. प्रॉफिट है लॉस है? 4, 70, 76, 81, 15, 20, 58, 61, 20,000 का प्रॉफिट है. सो टू पार्टनर्स कैपिटल, रुपीज 20,000. अब सवाल बनता है ये 20,000 कौन से रेशो में बटेगा? 5:3:2 या 2:3:5? 5:3:2. Why? Old partners in old PSR. Is it point right? So for X it will be 10,000. For Y it will be 6,000. And for Z it will be 4,000. जर्नल एंट्री लिखो इसकी. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल 10,000, to Y's capital 6,000, to Z's capital 4,000, to X's capital 10,000, to Y's capital 6,000, to Z's capital 4,000. Being the profit on revaluation transferred in old PSR. Being the profit on revaluation transferred in old PSR. Did you understand this? है ना? अब सपोज यहां क्वेश्चन में दिया जाता that the effect of revaluation is not to be given on the assets and liabilities. In that case, what we would have done? We would have prepared a working note of revaluation account, whereby we would have found the profit or loss on revaluation. कितना प्रॉफिट आया? 20,000. Now that 20,000 का प्रॉफिट नीड टू बी एडजस्टेड अमंग्स द पार्टनर्स अकाउंट. उसके लिए दो ऑप्शन आपके पास. पहला, रेज. व्हाट इज द एंट्री दैट विल पास द एंट्री फॉर दैट? मेमोरेंडम प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्सेस कैपिटल 10,000, टू वाइस कैपिटल 6,000, टू जेड्स कैपिटल 4,000. And immediately you need to reverse that entry, but in which ratio? In the new ratio. So entry would have been excess capital account debit 4,000, Y's capital account debit 6,000, Z's capital account debit 10,000 to memorandum profit. Did you get that? Alternatively, you could have passed the combined entry as what? X, Y, Z. Old PSR. X was 5/10, 3/10, 2/10, and new PSR 2/10, 3/10 and 5/10. Yes or no? इसके ये मेरे को लिख लेने दो, फिर उसको आप लिखो. पहले समझ लो. Sacrifice और into bracket gain. Negative value आई तो gain, positive value आई तो sacrifice, because we are doing what? Old ratio minus new ratio. So excess sacrifice is 3/10, Y sacrifice is 0, and Z's gain is 3/10. So excess sacrifice and Z's gain is equal to 20,000 into 3/10, that is 6,000. जब भी मेमोरेंडम प्रॉफिट है तो हमको एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सो विल पास द एंट्री फॉर दिस एज व्हाट? Z's capital debit
rupees 6,000 to excess capital rupees 6,000, being the memorandum revaluation profit adjusted amongst the partners in gain sacrifice ratio. Did you understand this? Right on the heading, suppose in the question it is mentioned that assets and liabilities to be continued at their existing values, comma, that means we need to do the memorandum revaluation of assets. And the accounting effects will be as follows. Now draw this. Done? Okay. Let's come to this question number 2 then. What does it say? X, Y and Z are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share the future profits and losses in the ratio of 2:3:5. With effect from 1st April 2020, they also decide to record the effect of following revaluations without affecting the book values of the assets. मतलब memorandum revaluation वाली बात आ गई. By passing a single adjusting entry. Now what they have given? Land and building existing value is 1,50,000 and the revised figure is 1,50,000. 1 lakh की वैल्यू थी, revalued figure कितनी है? 1,50,000. So it is creating the revaluation profit of 50,000. Plant and machinery, the existing value was 1,50,000 but the revised value is 1,40,000. मतलब वैल्यू कम हो रही है asset की. Decrease in the value of asset is loss, increase in the value of asset is profit. Increase in the value of liability is loss, decrease in the value of liability is profit. बराबर है? Trade creditor पहली figure कितनी थी? 50,000. Now what is that? 45,000. So there is a profit of 5,000. Whereas in case of outstanding expenses, there is a loss of 15,000. Yes or no? Accordingly, the total of profit comes to 55,000 and total of losses come to 25,000. Effectively,
there is a profit of 30,000. This profit of 30,000 belong to whom? Partners. But कौन से रेशियो में एडजस्ट करोगे? Gain sacrifice. Who is gaining? Z. Who is sacrificing? X. The same question, the same thing what we just wrote. यहां सिर्फ क्या किया हमने? प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट किया. So X's sacrifice and Z's gain is equal to what? 30,000 into 3/10, that is 9,000. इसको नहीं ऐसा मत लिखो, प्रॉपर प्रेजेंट करना पड़ेगा. राइट डाउन. वर्किंग नोट स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. अंडर दैट 5 कॉलम्स. पूरे के पूरे कॉलम बनाने पड़ेंगे वापस से. पर्टिकुलर्स, बुक वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट, प्रॉफिट, लॉस. मैं डायरेक्ट कर सकता हूं बेटा, मैं पास हो गया हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में. फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग. लिखो, वो टेबल बनाओ पूरा. और जो रेशियोज वाला वर्किंग नोट है ना, वो अलग से नहीं बनाया तो भी चलेगा, बिकॉज दैट इज क्वाइट एविडेंट. प्रॉफिट की टोटल 55,000, लॉस की टोटल 25,000, देयरफॉर नेट प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन रिवैल्यूएशन. राइट. एंड देन एक्सेस सैक्रिफाइस एंड जेड्स गेन इज इक्वल टू 30,000 into 3/10, that is equal to 9,000. Therefore, accounting entry, Z's capital debit 9,000. इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए. Z's capital debit 3,000, sorry 9,000 to excess capital 9,000. To excess capital 9,000. Being the profit on revaluation adjusted. Being the profit on revaluation adjusted. Correct है? We're taking a break now. Tomorrow's schedule I'll be posting on the group. So you need to be alert on the group. You'll be getting in the information on the group itself. Right?
That's it for the day. We'll be meeting again in the next lecture. Thank you very much. Bye-bye.